हाँ गाइस, क्या हाल है सबके। ये है मेरा दूसरा गेम जो कि मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक डेजर्ट मोबाइल। जैसे कि देख सकते हो तुम्हारा भाई कितना खतरनाक लग रहा है इस कैरेक्टर में। अभी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ तो खेल लूं बोल के, लेकिन बीजेएमआई तो खेल नहीं सकता, कोई टीममेट है नहीं अभी के लिए, सोचा यही खेल लूं। मेरा भाई इस गेम में सुप्रीम रूलर है, देख रहे हो। Rumor has it, there's an adventurer causing quite a stir around the village. I reckon that must be you. I'm pleased to finally make... There's a face, son. Bye. So, what brings you to this? If you were hoping to meet him, I'm afraid you're too late. Titty. क्या लगता है भाई ये आर्मर, ये देख रहे देखो, खतरनाक है भाई। ये लेफ्ट राइट रैंक कितना है मेरा, किसी पे रैंकिंग नहीं है मेरी। सीपी कसम भाई, 1 लाख में सीपी में बैठा है ये बंदा। सबसे लोएस्ट वाला कितना है मेरा, 300 वाला 77,571। मेरा कितना है, एक सेकंड अपना कहाँ से देखूं यार। यार मैं भूल गया, इतने दिनों से खेला नहीं ना, यहाँ तो देखना होता है ना। सीपी है 10,000। वहाँ कसम भाई बंदे 70,000 कितना रखे हैं भाई, 10,000 है। सीपी एसएस टीयर का है, एसएसएस। डिफेंस प्रोमो है मेरा, अटैक पावर तो ठीक ठाक है। प्रेस्टीज फैमिली सीपी टीयर ऐसा, क्योंकि फैमिली में अकेला ही हूँ। ये आर्मर बहुत खतरनाक है भाई, शुरात ब्लैक लेवल का आर्मर है, लेकिन है मेरे पास। चोमू ये सब क्वेस्ट पूरा करने से मिलेगा भाई। ये सब चोमू है भाई, ये भाई जिराया आउटफिट चोमू है। ओ ये सही है, चोमू बहुत ज्यादा ही चोमू। ऑब्सीडियन एरो ये उतना भी बुरा नहीं है। चोमू वो भाई ये मस्त है, बाबा ये भी खतरनाक है। ये फ्यूज वाला क्या बोल रहा है पता नहीं, मेरा बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये एक ही आर्मर मेरे को मिला साला। बूम, देखो
घोड़ा है, मेरा घोड़ा देखो भाई तुम। अरे बच्चे हटा, मर गए। ताता पबुल, व्हाट्सअप, कहाँ जा रहे हो मियाँ? कहीं नहीं जा रहे भाई। जायंट है ये, देख रहे हो? नहीं, गेम की ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन बहुत खतरनाक है भाई। एक मैं थोड़ा शहर के बाहर चलता हूँ। थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है एक सेकंड, गेम का तो देखने दो ग्राफिक्स थोड़ा। कुछ क्या करना है? क्वालिटी रेजोल्यूशन तो मैक्स है, सब तो सही है, मैक्स सेटिंग में ही है। रेंडर थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है ना। क्या बता यार, ये सेटिंग बना ली। मेरा बैकपैक भर जाएगा, कुछ खोल दे। थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। If the Fogans ended up like It may very well even you. भाई इस ये You सब will स्किप मार देता witness. हूँ, बोरिंग Hold on, लगता है। Trevor. I've given you all. Aluston. Why would you? भाई मैं जब केओस स्वॉर्ड एक्वायर किया था, साला मेरा मैसेज तो नहीं आया होगा बड़ों को, इनका मैसेज आया जा रहा है भाई मेरे पास केओस स्वॉर्ड को दिखा। There is light. ये देखो, केओस कटानास, केओस शील्ड्स दोनों है मेरे पे। और भाई देखो सारे मिथिक के सारे वो लगे पड़े हैं। बस एन्चेंटमेंट नहीं है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है।
टेंट नहीं, Oh, I see you're टेंट नहीं back होने from पर reading ही Janat's journal, huh? I've been waiting. Hey, what's that look नहीं कर for? I'm सकते way too ब्लैक cute to eat and maybe a bit of a rest. बकर बकर बहुत करते हैं भाई ये अर्ली स्टेजेस में, पता मतलब विलेज वाले I've been मिशन waiting for you. Belmont. सब बैच लादा विंटर वाला भाई, Ever since we need विंटर to वाले alert पे किया था Master. पहले मॉन्स्टर भाई, अरे ड्रैगन मारा है भाई सुप्रीम रूलर को पहला, इतने लो लेवल पे मारा है मैंने। A journal. So that's why His best option to protect. Does this mean that the Shadow लो Knight लेवल वाले को adventurer. ऑटो में करने देता हूँ It's भाई। long देखो, ago, Belmorn reigned as king over the Hexa Kingdom. He was an ambitious conqueror who instilled fear far beyond his dominion. Yet time takes its toll on all of us, including him. Belmorn was growing older, as were his worries. In an abominable act, he summoned the evil god Kazaka, unleashing a wave of corruption that left all it touched neither living nor dead. And so righteous individuals emerged to contest and ultimately vanquish both King Belmorn and the Kazaka. These individuals were known as the Knights of Dawn, pursuers of truth and defenders of balance. However, the fallen Belmorn did not simply vanish. Instead, he left a lingering curse on the souls of the surviving knights. Those who sealed and oversaw Belmorn's remnants, the descendants of the Knights of Dawn, little by little were consumed by darkness. They became the Shadow Knights, now orchestrating the revival of Belmore. Regrettably, we have no knowledge of their current whereabouts. But rest, there is a matter that requires my attention elsewhere. Alustan, what are you Let's save our words for... Finished with your business here, have you? All your ducks in a row? Good. Then perhaps you could spare a moment of your time for me. Lady Isabel's business has been going smoothly. The Jean Merchant Guild. Now, we're about to transfer Isabel वो those है China जिससे Knight मैंने आर्मर units. लिया By the है। way, I'm quite pleased with how you... I'd like to recommend you for a position in our guild. Membership would give you a solid social foot, from immigration checks to travel and various profitable endeavors. Your type... We'll talk more on the matter later. I see Lady Jarrett's doddering old butler is looking. Adventurer, I hear you've made quite a name for yourself throughout Serendia. Lady Jarrett has great faith in you. Even now, she urgently seeks your presence as a small problem at the Black Crystal Extraction Mill. Once again, we find ourselves in need of your goodwill and assistance. Oh, well, isn't that a coincidence? Lady Isabel is also looking for this adventurer. It seems you've gained the trust of both Serendia and Calpheon. You've been rather busy, haven't you? Busy कैसे बोल रहा है पहना का? Either way, both esteemed ladies are at the Black तेरे को Crystal पता भी है मैं Extraction कितना लड़ा Mill. हूँ? Why don't we make our way there together? मतलब पूरा ग्राइंड किया हूँ, चलो एक भाई इसमें सीपी 10,000 से ऊपर ना हो तो गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते। चुतिया पे साल सीपी बढ़ाया हूँ मैं इतनी स्ट्रगल करके, और इतनी जल्दी बढ़ता भी नहीं है सीपी भाई। लेवल मुझे बढ़ जाएगा, इतनी जल्दी जल्दी सीपी बढ़ता नहीं है।
There's only so much leniency I can show. How much longer must I turn a blind eye? Have we not already granted you 3 extensions? What are we to do if you request yet another delay? This is becoming untenable. Any further delays and we risk having an inspection team. Sir Edmund Jawson, I hear you're a knight of Calphion. Are you threatening House Domingut? Threatening? I'm simply stating procedures. And why, yes, I was knighted by the Callous Parliament. Perhaps you have forgotten to whom your father, His Grace, swore allegiance, Lady Jarrett. Adventurer, I've run into a little, slight problem. Would you help me? Yes, I will. Show me your gear. Slight problem? I'm sorry, did you say a slight problem? बुड्ढे औकात मेरे Lady Jarrett, you are grossly underestimating the situation. You have had the Black Crystal rights for 7 long years. Shall we never again own what is rightfully ours? Is Calphion's conscience so unperturbed? This unconscionable exploitation is truly tiresome. How much longer do you intend to milk this mine? Exploitation? You'd be wise to watch your words, my lady. I have proof of Bobby Lauren's forged ledgers. Do you really believe that Grand Chamberlain Ducasse is unaware? Persist in this matter, and I'll call for the inspection team. You plan to accuse a man renowned for his integrity of such a crime? Ha! Who would believe you? Ha! And just how long do you plan on blaming us for the declining extraction when we have such poor equipment? Why don't you send more technicians for maintenance? You have to invest to get results. Invest! As per the terms of the contract, signed in the Declaration of Surrender, production and transportation are the sole jurisdiction of Serendia. Surrender this, declaration that. Oh! You pick and choose when you want to be an ally, and now you're treating us like this? You swine! There it is. There's the lady's temper. I haven't seen it for a long time. Lady Jarrett, Sir Edmund, I would like to propose a solution. Would you care to hear it? Oh, Lady Isabel. As expected from one of the prestigious Calphion merchant families. By all means, go ahead. I am all ears. Sir Edmund, I hear that you've been searching for high-purity black stones recently. भाई हाई प्योरिटी ब्लैकस्टोन बोल रहा ना मेरे पे 300-400 पड़ा था मैं उसको रिफाइन कर चुका हूँ How did you? No, that's not the point. Yes, I have been searching. ज़्यादा पड़ा था भाई मेरे पे 1500-2000 कितना पड़ा था मैं रिफाइन कर दिया. Then why not commission the most skilled adventurer in Serendia? Oh, don't tell me. You've been away on business in Calphion for so long to have not heard about this adventurer's fame. Anyway, if we were to find even a single high-purity black stone, wouldn't that be enough to meet this delivery quota? Well, that's true. That place, it's full of danger. There are remnants of black stone scattered all over. इज़ाबेल को थोड़ा देखते का है ये है क्या ये इतना टाइम अच्छे देख नहीं पा रहा दे दूंगा चोको इसको ना भाई छोड़ो हेलो दे जेट अबे यार क्या हो रहा है इधर तो जेट नहीं दिख रहा I don't think danger will be a problem, right, adventurer? Yes. If you pull this off, I'll immediately recommend you. I don't like siding with this woman, but I must admit it's a realistic solution. If you are both in agreement, then it's fine with me. Well, what's the worst that could happen? बेटा 10,000 से ज़्यादा सीखे और तेरा मिशन है साला कितना लेवल 10 लेवल 15 का मिशन है मैं लेवल 59 हूँ मास्क कर दो इससे As you get closer, there are too many orcs for our troops to subdue. Orcs बोल रहा है ड्रैगन मार के ये भाई ये भी चोमू है भाई ब्लैक स्पिरिट भी
गए। रेड ऑर्क्स मारने में टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट पहले एक बॉस को ले लिया था। मारो भाई, मारो भाई, मेरे को मार लो भाई। ओ ओ ओ गुदगुदी होली है भाई, गुदगुदी। ओ भाई, ओ भाई, गुदगुदी होली है। ओ गुदगुदी। ये रेड ऑर्क्स है। गुदगुदी हो रही है भाई, ओ टिकली टिकली हो रही है। खत्म हो गया। दो सेकंड हाँ, ये मशरूम लवर चले ऐसे टाइटल को लगा। Who are you exactly? The one who sent the sword through Edmund? We are the Shadow Knights. We serve King Belmorn of Hexa. He's long dead. Huh? That's right, Jordine. We've been preparing for the King's resurrection. Nonsense. Just one final step remains. A vessel to contain our King's pure wrath and ambition. You, Jordine. You dare to make me a sacrifice? I see it differently. जो जॉर्डिन करा मेरे से एक बार लड़ा Do not wish for the destruction of Calpheon. With Lord Balmorn's power, that can easily come to fruition. Serendia need not stoop to dark sorcery. By my might alone, Calpheon will crumble. You will soon make your decision. कंट्रीब्यूशन जितना हाई रहेगा ना उतना बढ़िया है मेरा। देखो सीपी तो बढ़ता है लड़ाई करके, लेकिन एचपी और डिफेंस नहीं बढ़ता है ना। तो वही है, मैं इसीलिए छोटे छोटे मिशन कर रहा हूँ एचपी और डिफेंस बढ़ाने के लिए। सीपी इस एक टाइप का माना है, ठीक है, माना मैजिक पता हुआ। फिजिकल और डिफेंस कुछ उससे होता नहीं है, छोटे छोटे मिशन से अटैक एंड डिफेंस बढ़ता है। Orcs are no easy opponents, yet you returned unscathed. I would. Did you manage to find anything? Oh, impressive. After refinement, this will suffice for our current shipment. And with this, our adventurer has solved yet another case. Congratulations on joining the ranks of the Shan Merchant Guild. I believed in you, adventurer. This time I will personally report of your success to Sir Jordine. Maybe with this incident, the winds of change shall stir up relations between Serendia and Calpheon. Shall we head back to Heidel? And don't worry, it's my treat today. I'll go ahead and grab us a table. Feel free to take... Don't be too late. Golden Toad Inn, got it? See you there.
हेलो भाई गोल्डन टोड Huh? Isabel, what are you doing here? Don't... Me? Don't be absurd. We, the Jean Merchant Guild, have acquired this establishment. Ah, that Bobby Lauren, all talk and no action. I'm in a good mood today. I'll let it slide. I hate to show up and spoil the mood, but it's a rather urgent matter. What is it? It better not be something trivial. From tomorrow, this inn will be under strict surveillance. It's about the war. The war between Serendia and Calpheon. What are you talking about? Did I hear you correctly? Yes. Grand Chamberlain Jordine Ducasse is planning to wage war against Calpheon. Do you realize what you're saying? Serendia is a vassal state. Why would we... If you're not careful with your words, both Trina Knights and Delphi Knights will come marching this way. I'm well aware. That's why I'm discussing this discreetly with you and the adventurer. Simply put, the current standing Serendian army is too large to merely be used for subduing bandits and demi-human. Despite being burdened with high taxes, farms across Serendia are stockpiling surplus, and Median mercenaries are quietly amassing while only being appointed to menial tasks. You've seen it with your own eyes, haven't you? Adventurer, you too. Don't tell me you believe all this was done to bolster the strength of the nation. And don't misunderstand. I want to prevent a war. I just want to grow the Jean Merchant Guild by boosting Serendia's economy. Besides, Calpheon is about to hold an election for Chief Councillor. They don't want any ruckus. My father, a member of the Callus Parliament, is a candidate for Chief Councillor. You... I will not! This concerns my people. If you were me, how could you possibly remain calm after hearing such slander? Go, 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 go. Do you have any proof? This is all circumstantial. I must hear it directly from Sir Jardine himself. I cannot trust the words of some merchant. Don't worry about the little lady. I've already sent word to Sir Roig. We're short on time. We need to resolve this matter entirely within a few days. Thanks to the exceptional skills of our newest member, we've already made great progress. Now only the Baragi bandits remain. But isn't the standing force of Serendia a bit excessive for that? The Callus Parliament has already begun to notice. Sooner or later, an inspection team will be dispatched. Imagine Calpheon requesting a reduction of the standing army. Would Jordine really want to give up all that power? In that case, he would probably go to war. Even if he doesn't desire it, the situation will force his hand. You mean the embezzlement at the Black Crystal extraction mill, right? I knew that wasn't Serendia's fault. Seeing the look on Sir Edmund's face when you presented that Black Crystal, it was obvious what he had been up to. At first, I thought it was Jordine embezzling for his military nest egg. Well, I suppose they're both guilty of embezzlement in the end. The important thing is what the Callus Parliament thinks, not where the Black Crystals ended up being used. I'm certain someone I know well within the Council is likely to have connections with Sir Edmund. Hold it. Let's sort things out one at a time. It's better to tackle everything clearly. Right, Rookie? Taken aback by the title? I did promise you a position for a job well done. Worry not. The title will soon prove a useful status to wield. A fine plan. The Grand Chamberlain already trusts you. If there's anyone who let his guard down around. You're the only one in all of Serendia who can gather reliable information directly from him now. Well, I know the real power was his sister, Grace Lauren. But, judging by Bobby's demeanor, I doubt we'll get anything interesting out of them.
But remember, don't push him too far. If something unfortunate happened to you, it'd be quite the shock. I'll look into the financial records of this inn. It seems it was... Adventurer, please. I first perceived you as a young, ambitious upstart, seeking to rise above their station. So, what brings you to me? Let's be frank. Look, His Grace has always been recently due to issues with our finances, but ever since that war, since our defeat, our country may have lost, while we may appear free, take the black crystal. The black crystals hold the potential to make Calpheon crush us because I yearn for my... The first step will be it won't be an easy... If you agree... If you view it as just an I too am a citizen of a defeated country. Indeed, after the war, my father was once Lord Constable of Serendia. Then one day, he was exiled. He was accused of deeply offending the king. As the scales tipped, I lived recklessly. I wallowed in the arms of a woman named Roxanne. Alfonso, ever earnest, had eyes only for Princess Durette. I wished him the best. Then, suddenly, the Princess of Calpheon, who was married to one of the princes of Serendia, died. Calpheon pinned the blame on Serendia and waged war against us. In the ensuing war, my father was killed. Consumed with anger and grief, I enlisted in the army alongside Alfonso. I still remember the moment I reclaimed my father's sword from the blood-soaked battlefield. We were on the cusp of victory when Princess Durette was taken hostage. Alfonso proposed the formation of a rescue party. His intentions were clear. He wanted to make a name for himself, elevate his status, and win the heart of his love. However, it was I who ended up rescuing the princess locked in the tower. Alfonso, unable to contain his eagerness, wounded his leg. The rescue operation did not go as intended. General Cliff used me as a decoy to escape with the princess. As a strategist, it was the obvious choice. I was left to survive by the skin of my teeth and return to hiding. Upon my return, I learned Serendia had been defeated. The king had surrendered and was now a duke. The Calpheon army then swept across Serendia, reducing Monvedel to ruins as a stark example. Then I began courting Durette. Alfonso, in shock from all that transpired, went into seclusion. A year later, when the Duke returned from the war tribunal, Durette and I pledged to marry. In that moment, the sole survivor of a crumbling family became the heir to an entire country. Shortly after, I became Grand Chamberlain, overseeing affairs of state in the Duke's stead. Now, with unfettered access to our nation's secrets, I learned of everything that had occurred during the war. My parents passed away while resisting Calpheon's attack on the Western Front. That tragedy was avoidable and born entirely from General Cliff's misjudgments. I couldn't stand the sight of him, so I demoted him and sent him to the outskirts of Balanos. Calpheon then constructed a black crystal extraction facility in the Western Swamp, keeping its output for themselves. It was only then that I came to understand the princess's death had been but an excuse to wage war, to obfuscate their true intentions. Moreover,
the subject of my youthful affections, Roxanne Fiaza, was discovered to be a Calphionian spy. By plunging Serendia's royal family into chaos, Calphion created an excuse to attack. She orchestrated the princess's kidnapping and delivered Calphion their victory on a silver platter. There were many questions I wished to ask her, but alas, she had already taken her own life. Ever since then, I've been living desperately to set things right again. बेचारा. Calphion stole everything from my country. Everything. Feels good to get that tale off my chest after so long. Give my proposal some thought and let me know what you decide. An opportunity like this doesn't knock twice. I trust you understand. And yes, it pertains to the White Witch you've been seeking. There's a theory suggesting she's connected to the disappearances we're investigating in southern Serendia. But for now, evidence is merely circumstantial, so there's not much to go on. मर्डर कर दी थी तो ब्लैक स्पिरिट ने मेरे को बचाया था. I've prepared a special meal for you. The cook here is quite skilled, so please, give it a try. पर्पल अरोमा ऐसा टाइटल में नहीं रखना. ऐसा टाइटल तो जिस पर गॉड लिखा हो तब मैं सोचूं. खाना खाने वास्ते आए रे बाप. भाई क्या अच्छा है भाई. ब्रेड और वो खा रहे हैं. क्या अच्छा. लाविश डिनर. सीढ़ी जितना घूमोगे ना ऐसा लगता है साला नीचे ही जा रहा है हर टाइम. Are you back from meeting Sir Jordan? So, even though he didn't say it outright, an intense fury for Calphion burns within him. Well, there's nothing more we can do for now. Let's get some rest and reconvene tomorrow. कुछ मिल सकता है क्या अपन को? क्या स्कोर ज्यादा तो है नहीं. 12 मिलेगा नहीं. क्या ब्लेसिंग के लिए तो कर रहा था यार. ट्रेलर आउटफिट तो है नहीं मेरे पे. आउटफिट अपग्रेड कर सकता हूँ क्या? How could this happen? Tell me! Why are they tormenting us like this? Don't cry, Lady Jarette. The heir of Serendia should not shed tears over such matters. Calphion ordered us to disband our army by day's end. Hence, एक और बंदा कौन देख रहा है भाई? summoned from Balanos. लिखना यार चैट में कुछ. The imp issue is far from resolved, yet they demand a hasty disbandment. This Jordan, what could he have done to provoke such a response from Calphion? Did you rest well?
The world has changed overnight. It appears we have another busy day ahead. Captain Cliff has urgently requested my assistance. The disbandment order was issued because of what the Shadow Knights did. The Shadow Knights have long been deemed heretics in Calpheon, and Calpheon has persistently sought to address this thorn in its side. Following your visit to the extraction mill, they struck under cover of night, laying waste to the place. It must have been Sir Edmund who reported the incident to Calpheon, and then the disbandment order was delivered by dawn. Heretics were discovered in the Protectorate. Thus, the need to root out potential traitors justified their order to disband. What? Oh, don't tell me. You're framing him? What, are you a spy from Calpheon? Huh? Lady Jarrett, please, calm down. This adventurer is merely a wanderer who awoke with no memories. What business did the Grand Chamberlain have with them? Was it black crystals? Sacrificial offerings of virgins and children? The king? The Shadow Knights seek a king now? Master Alustin, it was just as you surmised. Indeed. It seems they aim to revive the Monarch of Darkness, Belmorn. Belmorn? Captain, was Belmorn not the old king who ruled the fallen Hexa Kingdom? Lady Jarrett, our chief concern should be the disbandment order. I need you to persuade the Grand Chamberlain to accept Calpheon's terms. What are you talking about, Captain? Are you suggesting that we station Calpheon's army within our borders? Accept the disbandment order first. It will prove to Calpheon that we have no allegiance to the heretics. In the meantime, we will uncover the lair of those specters and drive off those scoundrels for good. Lady Jarrett, Captain Cliff's judgment is sound. Should Calpheon uncover any hint of heresy, Serendia would once again fall victim to the atrocities of war. Surely such an outcome is far from your desires. Silence! Have you forgotten what those Calpheon bastards did to me? You dare ask me to call in those soldiers again! Lady! Lady Jarrett! Would the Grand Chamberlain truly accept that? A man who took great pains to raise an army just to strike at Calpheon? It won't be easy. If it's true, we're dealing with a far graver issue. I knew the Grand Chamberlain has been up to something, yet, if he is now bracing for a war with Calpheon, who knows what he'll do when he feels cornered? It seems there's no time left to lose. We must take action now. Adventurer, go to the council chamber immediately and keep an eye on the Grand Chamberlain. If the Shadow Knights approach him now, you're the only one who can stop them. Please. Adventurer, please save him. I beg you. You're the only one I can trust now. Your Grace, you've seen it for yourself. The foundations that Medea built itself upon. Yes, Grand Chamberlain. I know it well. Then why do you hesitate? Your Grace, why do you think Calpheon took over Serendia? Black crystals. The black crystals. It's because of those black crystals. Reclaiming the rights to the black crystals will allow Serendia to prosper once more. We can welcome back the days of glorious splendor. Grand Chamberlain, I
I am terrified. You must remain resolute. The taxes are only temporary measures. If we can reclaim rights to the Black Crystal business, we can return the taxes to the people. But how can we claim victory against Calpheon? We have already completed the initial trials. If we supply harpies, sawnills, and trolls with pure black crystals, they will provide ample distraction for Delphi and Trina Knights. If we seize that opportunity, we can take the Chief Counselor's head. Isn't it all too obvious? They've already seen right through you. Already? What is this? बैठ जाता हूँ, लड़ने का टाइम आ गया. Sir Edmund, what are you doing here? Glory to the Yeah, sunlight but, upon the eagle's feathers. पता था ये बुड्ढा Your मादर चोद है. Grace. Speak. I will be extraditing the Grand Chamberlain Jordine Ducasse to Calpheon. Bastard, how dare you! I'm sorry, Grand Chamberlain. I was fearful. Your Grace! Sir Jordine, you'd be wise to come quietly. You must stand trial before the Calpheon court. The trial will be fair, and if found innocent, Calpheon will compensate Serendia properly. My fate does not end here. Not like this. This calls for a change of plan. बैंगो, ये क्यों लड़ रहा है यार? Suspected! Shadow Knights! You're the one who... Quickly! Execute the traitor of Calpheon! At once! Sir Edmund, this isn't what you promised. Where is he? Jordine. Why? Anjin वो. Somebody please help! Adventurer, you too. I truly believed you'd understand. Oh. Your Grace, there's no turning back इसको now. पेलने के लिए बोला था क्या? Rest बोला था इन assured, लोग को पेलने के लिए बोला. you and the Lady Jarette will not be harmed. Jordine, why on earth are you doing this? For the glory, for the splendor of Serendia. उसको लड़ना किसकी तरफ से? सेरेंडिया की तरफ से कि कैप्टन के लोग? Jordine! अबे यार 2 सेकंड में इसका सिर काट देता मैं. अरे यार ये वो वाली स्टोरी है ना. अरे मैं पता है ये लेवल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ मैं, इनकी 1 सेकंड में मार दूं, लेकिन भाई ये स्टोरी ये मेरे को क्वेस्ट ही ऐसे करना पड़ेगा ना. ऑलरेडी रिटर्न है. What in the world happened? मेरा विल नहीं चलेगा इधर. Sir Edmund? Impossible. A knight of the Callous Parliament was used as a pawn? This is absurd. Father? Father! Are you okay? Are you hurt? Get away! Oh, Your Grace, please, pull yourself together. Wait! Did you say Jordine disappeared with the Shadow Knights? That watchtower. There's said to be a secret chamber beneath it. Master Alustin believes that to be their headquarters. We must stop them.
मैं इसको पार कर सकता हूँ अपनी एबिलिटी से, तो नहीं करने नहीं देगा मेरे को। चलो इसमें एक चीज ये बढ़िया लगता है, इसमें मेरे पास अनलिमिटेड स्टैमिना है। मेरे कैरेक्टर की वो है, मेरे कैरेक्टर की वजह से नहीं होता कुछ। शुरा है, शुरा एक्टर मेरा शुरा। मेरा पहलना है क्या? यो व्हाट्स अप? बिना एबिलिटी के पेल दूंगा भाई। एक एक शॉट हो रहा है, देख रहा ये देखो। थक गया भाई। छोड़ो भाई। अच्छा मेरे को इन लोग से लड़ना ही नहीं था क्या? ऐसा कुछ था क्या? तो विदार की भाषा है भाई, ये कैसे बोल रहा है? इसको सबसे पहले मारूंगा। कंट्रोल हो रहा है क्या इसको? किया क्या हुआ? वो तेरी गुस्से में है भाई, खेलेगा पहले इनकी माँ चोद देगा भाई। हैं? Bow before the Almighty. The King of Hexa has returned. ब्लैकी क्या कर रहा है? अबे मैं ऐसे क्यों गिरा पड़ा हूँ उधर? मेरा पैर ऐसे क्यों गिरा पड़ा है? एक पैर ऊपर एक नीचे। Jardine, if you find
succumb to the darkness? वापस आ गया मैं। ओ भाई, वो मेरा पैर ऐसे ऊपर हो गया है। I always knew it would come to this. Come at me. एक शॉट होगा, मैं बता रहा हूँ ना, एक शॉट होगा। देखो क्या नहीं हो रहा है एक शॉट। हाँ क्या, लेकिन फेल दूंगा इसको मैं। फेल दिया। Seems I need more time to get accustomed to this body. Meldor. Take cover! Jardine. अबे उसको पेल दिया क्या मैंने गलती से? आ गया वो। That damn Jardine! To नहीं the मरा very नहीं। end! Jerry. Preserver of life। nah, सुप्रीम रूलर अच्छा है, मेरे को पसंद है वो। भाई साहब भाई, वो लोग बंदे कैसे बढ़ाए हैं यार, इतना गंदा सीपीयू लोग। Adventurer, are you okay? You're not hurt, are you? By concern. Father, he's been bedridden all this time. The shock has caused him great pain. What of Sir Jardine? You didn't kill him, did you? मार देता अगर ये गेम मेरा लिमिट नहीं करता ना। Adventurer, can मारने you spare पीटने a को moment to speak? मार देता। As the protector of Serendia, I believe you must be kept abreast of the current situation. As you can see, His Grace is not in good health. Lady Jarrett will soon take her father's place. Alfonso will step in to fill Jardine's vacancy, and my old bones are left to deal with the remaining imps. So the most important task now falls to you. Will you hear me out? According to Master Alustin, your destiny leads you down this path, even without me asking. Stop Jardine. No, stop Belmorn. It's a shameless request, but you are the only one to whom I... Lady Isabel will continue to assist you. She is one of the few nobles of Calpheon who still stands with Serendia. He was once my protege, so I cannot bring myself to ask you to end his life, yet I will respect any decision you make. Adventurer, if you find him, tell him that I await him still. When the road of adventure wears you thin, you can always find respite and comfort here with us. तो जॉर्डन की गर्लफ्रेंड है, अब तो उसको मारना पड़ेगा। Adventurer, thank you for protecting Serendia. लेकिन ये गेम मारने थोड़ी देगा मेरे को यार। अटक गया बे। अब एक घोड़ा चलाना इतना मुश्किल क्यों है यार? Oh, I promised you something in return for completing the mission, right? Here, take it. I don't know why you're collecting black stones, but if we're to work together again, I suppose I'll need to gather more. Anyway, let's set off for Calpheon now.
We will need to... I'll leave first with Povius. Let's meet at the entrance of the castle, rookie. Serendia Explorer. नहीं चाहिए वाकूफ. Rookie, you're here. This is the castle where the Delphane Knights, one of the Oh, Serenity. Clear हो गया. But it appears we've hit a bit of a snag. Wouldn't it be grand if you could step in and untangle the... Over there's a shy named Jeren. Go inquire about... I've some business to take care of. India neutral border zone progress. So border cross नहीं कर सकता ना. My apologies, but I cannot allow you to pass through the main gate. Headquarters have declared Delphcon 1. Civilians cannot pass, so I suggest you turn back. Oh, a request for cooperation from the Duke of Serendia. And I see you identify... What's that? A Knight of Serendia! All right. Lend us a hand in defeating the Harpies, and our personal adventurer. Once you've defeated the Harpies, go look for Captain Margaret up on the... साले 2 सेकंड में स्पॉन हो जाता है ना. ये गुस्सा लगता है साला. कम से कम 1-2 मिनट लगता है स्पॉन होने में. Serendian hero I've heard so much about. A knight now, are you? Please forgive us for not giving you the treatment a knight deserves. As you can see, we're facing a bit of a problem. I'm Margaret, captain of the Delphane Knights. Jeren has informed me of the situation. Harpies have always inhabited the nearby Karanda Ridge. They often raided the village to steal food. But this is the first time they've invaded in such large numbers. This surely has an underlying cause that necessitates thorough investigation. Our forces are putting all effort into driving away the Harpies, so we do not have the freedom to investigate. Should you lend us your aid, I'll promptly draft a document granting you permission to meet with the commander. इन लोग को मार नहीं सकते क्या? Wait! Please give me a moment. No need to worry. I'm also preparing you. Oh no! Harpies are readying another round of attacks. Please head to the commander and... What a racket. We apologize for not announcing ourselves. Your soldiers seem too busy dying. It looks like you've acquired a taste in training Harpies. Hardly the case. I simply take opportunities where I see them. With me as their king, we have come to declare war on the Republic of Calphion. This attack is just the beginning. I will destroy every settlement on this list, one by one. Get a hold of yourself, Jordine. How long do you think their loyalty will last? That should be the least of your concerns. Relay this to the old fool in the council.
I will burn everything that Calpheon has to the ground. And from the ashes, you will learn what despair truly is. क्या था? Madman leading a bunch of heretics and declaring war. How did Sir Edmund overlook this? Who are you? Civilians are not allowed here. If you fail to a Serendian knight and a member of the Jean Merchant Guild. Never heard anyone claim to be a merchant by day, but a knight in a fray. I don't talk to fools. Alone, I will skip you, motherfucker. How selfish. The personal request of... It's shame. Resolve this well. यार मेरे को उसको जॉर्डिन को मारना था, हार्पी क्यों मार रहा हूँ यार? It's you. Weren't you in Glish earlier? What are you doing here? Don't tell me you followed Belmorn. Are you nuts? May we talk? There's something I'd like to discuss. In the end, it seems Jordine awakened Belmorn. We encountered him briefly. Enough for a moment's observation. Jordine maintains control over his own consciousness for now. But once Belmorn awakens, it will cover not only Calpheon, but the entire world in darkness. Carefully. Bye! We must stop Belmorn. As secret guards, pursuers of truth, and balance in the world. It's our duty. You're after him too, right? Then our purposes align. But that black spirit of yours, it will drag you into the abyss, just like Belmorn. I sense it. It attempts to dominate you. So while making that proposal to you, I revealed the secret. Belmorn will soon erase Jordine and claim his body completely. We must stop him before that happens. ये ब्लैक की बहन के लोड़े चिकन को साले को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया मैंने? ये साला मेरे को मारने में तुला हुआ है। Eden, stay still, will you? You're making it impossible to focus. Perhaps you can provide some I pledge to aid, given all that's transpired. Now, here's your temporary and... Huh? I don't sense any bad energy. See, Florin is rightful. Whatever you want. Oh, yes, fool!
canal get such a nasty wound? Friend of the shy. Do alchemists still use such catalysts these days? Oh, interesting. And strange, too. Enough rambling, you old coot. Hurry up and heal Orwin. Or else. It's the first time I've seen such severe symptoms. It's hard to clearly say what it is. Could it be that she was exposed to dark energy? If that's the case, there's only one method of neutralization. I know how to make the antidote, but there's one problem. The ingredients can only be found in Khafra's cave. But it's dangerous to send a herb called... I prefer to fetch the medicine for her myself. I'd like to... These seeds were crossbred with herbs. Or, something like that anyway. कितने सारे मिल गए रे मुझको स्पायर आइटम बेच के भाई कुछ सीड वीड बेच रहा है भाई बट When I was young, the adults in town told me never to go in there. Do you see them? They're adventurers possessed by the black spirits. Those guys must have once wielded strong power and adventured around the world just like you. Completely blinded by the sweet, sweet power gained by doing the black spirits' bidding. But what should we do? They're gonna attack. Can you fight them off? You're a symbiote too. We've met, but ultimately, they all ended up like this. Do you now show us? Well, shall we go in? Small and white? Orwin, hang on. Just... This must be Silverfrond. You don't think of it, Valentine's spec. ओए क्या मिला पेट 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 चेस्ट मिला एक सेकंड वेट वेट वेट
तो मिला मेरे को। थोड़ा कुछ इतना काम तो है नहीं। अच्छा वो मिला था क्या? नहीं ये मिला था मेरे को। पेट गुरु। नाइस। ये इतना खेलेगा यार, बहुत खेल लिया है आज तो। 1 घंटा पूरा खेल लिया। पीछे में थोड़ा सिकरंद करते हैं, एक दो वामड़ खेल के चलते हैं। 1 घंटा खेला बे, तक खेलू और ऑनलाइन है कोई भी नहीं बाबा। ये तो पंडित भी है। है बस ये समझ चलो। अ अ अ मुड़े बिम्मा चुम्मक चलो, मुड़े बिम्मा चुम्मक चलो आहियो, मुड़े बिम्मा चुम्मक चलो हिया हुआ, मुड़े बिम्मा चुम्मक चलो हिया हिया Simulation game set in a virtual world and does not चोमुटी मिला के represent real बाद life. Please play in moderation. Take what's up bro? रिवाइव कर रहा। help! Watch out! Watch out!
Watch out! Since I was a kid, I've been legit. Bye. Help! Help! Watch out! Attack the mark! बचाओ! ये करना Get in the शुरू कर car. जाता है। बचाओ! ले कर ले, बचा ले। साफ चूत भोसड़ी वाला यही शुरू हो जाता है। Help! चूतिया है यार, एक नंबर दिमाग खराब है ये। 2 सेकंड में ही दिमाग खराब हो जाता है चूते की वजह से। और ये बाहर ही खेलेगा भाई। ये देख भाई, ले भाई नेड मार रहा है एक बंदे पे। कि चूतिया है भाई ये। कैसे बड़े हुए बंदे आते हैं भाई रेड में मेरे साथ। Help! Watch out! Marked a location. बचाओ! बचाओ! जान मरा। बचाओ! 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 जान मरा। करते रहे बचाओ बचाओ। मैं 1v2 में क्या तेरे को रिवाइव करूं? छोड़ दिया, मारना भाई इसको। क्या है छोड़ दो, मैं मारू तो नहीं मरता है। एक शॉट में मर जा रहा हूँ मैं। इसको फोड़ लिया। ये देखो भाई,
कौन आ रहा था क्या? कुछ भी है बहनचोद भाई। इसको पहले मारा मैंने, मारा नहीं भाई। इसने एक शॉट मारा, मैं मर गया। कुछ भी चल रहा है भाई। सडनली 1v1 कैसे हो गया भाई? पकड़ लिया भाई। पकड़ लिया यार। भी इसको एक शॉट मारा बेटा क्लोज रेंज में। मारा कैसे नहीं पता नहीं आई। अब तो कितनी एचपी है भाई बताना यार। पहले शॉट में कितनी एचपी हुई तेरी भाई? ये क्या है ये मोड यार? ओ भाई हिल कर ले, हिल कर ले। इस बार प्रेडिक्ट कर लिया लेफ्ट से आएगा तो। अब यार ओह फंस गया। अरे इसके अलावा ही तो चलो ना। ये क्या कर रहे थे सुबह सुबह भाई? हाँ भाई, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो भैया? अरे 10 वाला स्पिन करने आया हो भाई। अरे मैं तो भाई, वो एक तो गेम है ब्लैक डेजर्ट बोल के, वो स्ट्रीम कर रहा था। तो अभी सोचा चलो वो एक दो वामवर्ड खेल लेता हूँ, वही कर रहा हूँ अभी। चालू है मेरा स्ट्रीम। कितने 5 बजे बढ़िया है से, भाई। 5 बजे से कर रहा हूँ अभी। 2 घंटा हो गया। इतना सुबह कौन करता है भाई। ऐसे ही यार, मैं सोच बताया मेरे को, मैं बीजीएमआई खेलने का वो भी नहीं था मेरा मूड। मैं बस वो ब्लैक डेजर्ट मोबाइल वर्ल्ड की तो गेम है, मैं वो खेल रहा था।
वो मन लगा था तो वो कर रहा था तो भाई फिर लाइक कर देना जाके साले स्ट्रीम भाई। करता फिर हूँ। मैं सोचा एक बार और बीजीएमआई बता। भी खोल लूं, चला खोला नहीं है। चलो बता, मेरा 2000 कब भेज रहा है तू? तेरा कौन सा 2000 भाई, मेरे को याद नहीं है भाई। वही दो हजार चलाना पड़ेगा मेरे। नहीं याद है भाई, 2000 की तो। तू आ नहीं रहा है भाई शाम को खेलने, क्या दिक्कत है भाई? शाम को नहीं यार, नहीं हो पा रहा मेरा थोड़ा एग्जाम भी है ना 15 तारीख से, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बैठा हूँ। मैंने सोचा तुमने हक दिया भाई गिले सूट पहन के। अरे नहीं, मैंने वो पता नियर बाय से उठा लिया। अबे वो नहीं है गिल्ली सूट का, कुछ वो नहीं है, खाली दूसरा कपड़ा नहीं उठाना है, गिल्ली सूट का कोई वो नहीं। ऐसा नहीं है, भाई अबे ऐसा कपड़े हुआ का तो। सेंस भी क्या है भाई? हाँ, चेंज भी कर ले तो क्या ही दिक्कत है भाई? कपड़े को क्या ही सीन है भाई? कपड़े का तो वो पता नहीं मेरे को, लेकिन गिल्ली सूट का नहीं है उतना, वो नहीं है। और मेरे को वो उधर ना मैचअप पे आईडी पास, रूम आईडी वो सब दिखा रहा है, ऑप्शन दिखा रहा है। जो कि आधे जो बंदे मेरे दूसरे दोस्त भी खेले हैं ना, जो लोग खेले हैं उनका नहीं दिखा रहा है वो उनका 20 का 15 का एवरेज गया है, हम लोग का तो कम से कम 30 का एवरेज गया है। तो शायद से हम लोग हाँ क्वालिफाई तो हुए हो हैं। जाएगा। वो सब दिखा रहा है, अभी मैचअप भी दिखा रहा है उधर मैचअप पे। हम लोग का ग्रुप जब कर आएगा तो लो दिखाएगा। मैचअप। नहीं, मैचअप दिखा रहा है कि उसमें हम लोग का स्लॉट व्लॉट पता चलेगा कौन सा है, वो दिखा रहा है। तो अभी तक वो सबसे सेट नहीं हुआ है सब कुछ। वो पता नहीं, देखते हैं। पनिशर तो बोला है कि ग्राइंड खत्म होने के बाद रिजल्ट निकलेगा। अभी तो रिजल्ट सून बता रहा है। हम्म। भाई काश ही कुछ चोदू वाली वो मिल जाए भाई, ग्रुप मजा आ जाए भाई। चोदू ग्रुप मिल जाए राउंड 4 तक। चलो भाई पॉपुलैरिटी मारो। ये ब्लेज भी आया है क्या? सब आ गए भाई आज सुबह सुबह। नहीं रहा लोग भी बड़ा। और भाई रंगीला आदमी, स्टोरी वोरी छोड़ी जा रही है पूरी मस्त मस्त वाली है। माइक ऑन कर लौड़े, स्टोरी वोरी छोड़ी जा रही है, मैं देख रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं, जा रहा जा, जा। ब्लेज स्ट्रीम कर रहा हूँ, लाइक कर दियो जाके। मेट्रो हूँ, हाँ मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, जाके लाइक कर दियो। मेरा दूसरा चैनल अच्छा खासा चल रहा है भाई, और मेट का पता है देखो। क्या वॉचिंग? अबे तू विश्वास नहीं करेगा, वो जो मैं गेम खेल रहा था ना, उसपे पता है स्टार्टिंग से एक बंदा आके बैठा। वो मैं जब वो गेम खत्म किया ना खेल के, जैसे बीजीएमआई स्टार्ट किया वो भाग गया। कोई एक तो बंदा बैठा हुआ था स्ट्रीम पे मेरी उतनी देर से। वो मैं वो गेम खेल रहा हूँ ना, तो वो देख रहा है वो मैं जब उससे हटा बीजीएमआई चालू किया कि भाग गया भाई। चल मैं क्या जाता हूँ बोलूं। तेरे स्ट्रीम पे, मैं भी जा ही रहा हूँ फिर सोने। हाँ अबे मैं भी बंद ही करने वाला हूँ, एक दो वो खेलूंगा, वार्मोड हो जा रहा हूँ। अरे मैं ही था, अच्छा तू ही था क्या साला? तो भाग क्यों गया साले? मेरे को लगा भाई कोई बंदा आया, देखा चला गया भाई। मैं बोला भी कौन हो भाई, बता दो, हम लोग की जान पहचान का है तो। चल मैं चलता, मैं जा रहा हूँ वामड़ खेलने भाई। अभी थोड़ी देर खेलूंगा तो जा रहा हूँ। ऐसे समझ लीजिए। नेशनल बैटल खेल चलो, बस्ट खेलते हैं। लेट्स बस्ट बैटल। बहुत गंदे जाने वाले मेरे बस्ट, मेरे को पता है भाई। वो टीममेट नहीं आया, नाइस।
आ गया भाई। मेरा स्कोप कहाँ गया यार? अबे हट। कहाँ है भाई? अबे बंदे ऑफलाइन है क्या? अबे यार हट। ऑफलाइन है क्या? रुक तो। अब नहीं आया तो अच्छा दिया मैंने। मारा तो पीक लेके बैठा पूरा। क्या कर रहे हो? नशे में क्या? अबे यार मेरा ये कब सही होगा यार? लो एचपी है। शांति से बैठ जा। कर ठीक। ऊपर क्यों आ रहा है भाई? विदाड़ बनने की कोशिश। ओ भाई अबे ये ऐसे जो हो जाता है ना ऐसे, मुझे गुस्सा आता है यार। क्या कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं है क्या? आएंगे लड़ सुबह सुबह। भाई सुबह सुबह। मारा यार। ए चोमू टीममेट। अबे कैसे नो? व्हाट द हेल? हाँ मरा साला। संदीप भाई से तो
हाँ ये रैप मेरी हुई। ये देख यार, ये देख ये ऑटोमेटिक, ये देख जो हो रहा है ना, मेरे को गुस्सा आ रहा है इसका, पता है। मेरे को आ रहा मार दिया। ओ यार ओके, चलो दिख भी नहीं रहा था, मर गया। नो भाई, तो शांति से हेड दिखाएगा ना, मैं मार दूंगा। आगे कम ऑन बिच, कम ऑन। क्या क्या भाग गया भाई, सब क्यों भाग जाते हैं यार। यो भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। जो लोग भी हाई हुल लाइक सब्सक्राइब मार दो। भाई चिराग देख रहा है, मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ भाई स्ट्रीम। मैं खेल ही नहीं रहा भाई, मेरी गोलियां तो भाई प्लास्टिक की है भाई। नंबर 1 चौधरा भाई। भाई अभी मारूं क्या भाई, जॉर्ड बन के मारूं क्या, जॉर्ड पूरा। भाई लो भाई, मारता भाई, लो मारता भाई, अब रुक जाओ। मारा भाई, पेलेगा अब देखो। पिला गया। ए नंबर 1 लड़ू लेके क्या बैठा, मारना भाई आके, साला मुंह के सामने से आ रहा है बंदा। मारेगा ये, मारेगा मारेगा। यार ये कॉम्पी ऐसे खेलने मन नहीं करता है, ये सब मोड पता है। आराम आराम से उंगलियां थोड़ी आराम आराम से चले। सच में 20 FPS है क्या इस बंदे को।
की तरफ जा रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ। भाग गया। दोनों भाग गए यार। ये क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों भाई थोड़ा मार खाने के बाद भाग ही जाते हैं सीरियसली भाई। जाना ही क्यों है यार, चलो ना भाई। ये ना भाई, मन्ना मन्ना तो लगे रहता है। नोएडा का नो विन वाला बंदा आ गया। 1v2 है मेरा। अबे ये तो इधर बैठा था, इधर कैसे आ गया? What the hell? देखो भाई, देखो कहाँ बैठा है दूसरा मादर तो टंकी के पीछे क्या भाई? कितना कितना शॉट मारा भाई उसको मैंने वो घर पे है। इतना कवर में कैसे मर सकता हूँ? इतना कवर में कैसे मर सकता हूँ मैं? भाई इतना पास मार के भी कोई कैसे नॉक कैसे नहीं हो सकता है कोई? सेंट्रिक्स कर रहा बैट। मैं कुछ कर ले यार जिंदगी में, मारा गेमिंग। गेमिंग ही क्यों है तेरे नाम पे? भड़वे रिवाइव कर रहा है यार सामने। अरे मार दे यार इसको आके भाई प्लीज। हाँ मार दे, थैंक यू भाई। मैं अकेला ही काफी हूँ भाई, खेल लूंगा मैं। मार ले कुत्ते के पिछले, मार ले। वो मेरे को ही से जाटू बंदे क्यों मिलते हैं यार टीममेट है। यार अबे एक किल नहीं मारा बे चुतिया, एक किल नहीं मारा है।
एक भाई एक किल के एक शॉट तक नहीं मारा, डैमेज देखो जीरो चुतिया। लंड के बाल लोग। मेरे को ही लगता है इसका गोली मेरे को ही लगता है लोड का। अरे यार यहीं पर बैठे रहेंगे जिंदगी भर यहीं। अबे ये तो चला गया था ना, ऑनलाइन कैसे आ गए? गोली कुछ भी लग रहा है इसका यार। अबे नंबर 2 कुत्ते के पिल्ले यार, क्या कैंप कर रहा है यार, मार ले भाई आके। यार मैं नहीं खेल रहा यार, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है यार। और कितना क्लोज से मारूं इसको? नंबर तो कुछ हाँ क्या है भाई, ये देखो भाई यार मैं के हो गया भाई बहुत। अबे यार नंबर यार मैं कैसे चूतिया टीममेट हुए हैं यार मेरे जिंदगी में। अबे यार के अबे नंबर 2 भाई कुछ कर ले यार, जिंदगी में ऊपर जाके बस बैठ रहा है। ये ले बस यही कर रहा है। आ रहा है मर रहा है, आ रहा है मर रहा है, कुछ कर ले भाई। भाई एक किल नहीं किया तूने अभी तक ब्रो। ले मार ले भाई, इसको भी एक शॉट मारा है, मार ले भाई। बाहर निकल बहन के लोड़े घर से, मादर चोद ओपन में रिवाइव कर रहा है इधर लौड़ा। खेल रहा है क्या गेम पता नहीं।
मेरे टीम में से झाटू क्यों आ जाता है पता नहीं। अब मार ले भाई। भाई मुंह पे लेके आ रहा हूँ तेरे पे बंदे, फिर भी नहीं मार पा रहे यार। मत घुस, मत घुस भाई, मत घुस, कुछ मत करो, एग्जिट करते तू भाई। कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड रुकना यार, आ गया मेरा। एक सेकंड रुक बढ़ गए। ये रहा, आओ। अब आएगा मादरचोद मारने, ऑफलाइन प्लेयर नहीं चूत मारेगा। आला चूत, कैसे बंदे पैदा हो जाते हैं मादरचोद। बहनचोद मेरी किस्मत गांडू है, चूतिया बंदे मिलते हैं मेरे को हर टाइम। अच्छे बंदे मिल जाए गलती से तो भाई सामने वाले बंदे एग्जिट मार देंगे। हाँ यार, मारा गेमिंग, तेरी माँ को मारा गेमिंग। जा रहा भाई मैं, बहुत खेल लिया आज। खेल खेल के टट्टा सुकड़ गया। चलो आज का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं दोस्तों, भाई और बहनों। सोचो अगर मैं गन मिल जाते मेरे को तो, ना मिलेगी भाई। ऑन लाइव सोच रहा था मिल जाएगी गन भाई। इसमें इतनी अच्छी का 8 हो गए मटेरियल, 2 मटेरियल उसके बाद अपना लेवल 4 हो जाएगा।
और 2 मटेरियल। चलो इधर तो कुछ है नहीं अभी, 2 मटेरियल यहाँ से निकालने पड़ेंगे। कहाँ गया छोटा मटेरियल, कहाँ गया ये रहा। और 2 मिल निकल जाएंगे। मज्जे मज्जे भाई, मज्जे ही मज्जे। अरे मज्जे ही मज्जे। ओए ओए कितना बच गया? 7:25 हो गया भाई। चलो गाइज, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। देखते हैं आज दोपहर को या फिर शाम को होगा तो लाइव स्ट्रीम फिर से करेंगे। और बस अभी के लिए इतना ही। चलो गुड बाय, लव यू, चलते हैं।